everyone, welcome back to Miss Just channel. In today's video I'm gonna do a one brand tutorial which is My Glam. Okay, so before starting off the video I want to tell you one thing, that मेरे पास सारे products तो नहीं है because most of the time most of the products are out of stock. तो मैं कोशिश करूंगी कि जितना मेरा भी है मैं उसी से काम चला लूँ. तो जो पहला प्रोडक्ट है वो है एक क्लेंजर, जो कि छोटा वाला वर्जन है बड़े बॉटल का. सो यू गेट समथिंग लाइक दिस और देन दिस वन. आई थिंक दिस इज फॉर 199 रुपीज. आई थिंक आई बॉट सर्टेन थिंग्स फ्रॉम देयर एंड तब मुझे शायद ये मिला था फ्री में. सो आई एम गोना यूज दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. सो आई डोंट नो व्हाट इट हैज बट इट्स लिटरली लाइक ग्लोइंग. जैसा पर्ल्स होते हैं दिखने में बिल्कुल वैसा है. नाउ लेट्स सी व्हाट इट डज टू माय फेस. रियली लाइक रिच. इट्स वेरी क्वालिटी वाइज ये काफी ओके. माय फेस इज बर्निंग. आई डोंट नो व्हाई. इज इट एक्सपायर्ड? आई डोंट थिंक सो. इट्स एक्सपायर्ड. तो ये ना क्वालिटी वाइज काफी रिच है. लाइक सर्टेन प्रोडक्ट्स यू फील लाइक वेरी लग्जूरियस, राइट? ओके, तो आई जस्ट वॉश माई फेस एंड आई रियली फील लाइक I don't know, I feel fresh. मतलब वो तो सभी फ्रेश फेस वॉश करता है. It definitely brightens up your skin. I can clearly see that. क्योंकि पहले थोड़ी देर पहले my skin was looking very dull. भी मॉइस्चराइजर का वक्त है. So बहुत दिनों से मैं सर्च कर रही थी. Like I wanted this moisturizer but ये स्टॉक पे अवेलेबल नहीं था. It's been like 2-3 months now. This is the moisturizer that I wanted and can you see इसके नीचे लिखा हुआ है notify me. Like not only today, मतलब बहुत महीनों से ये ऐसे ही दिख रहा है. एंड नॉट ओनली दिस प्रोडक्ट, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर अनअवेलेबल. तो ये मुझे माय ग्लैम का बहुत खराब लगता है. लाइक यू डोंट स्टॉक इट अप. आई एम गोना टेल यू मोर अबाउट दिस कि और क्या क्या प्रोडक्ट्स है जो मुझे चाहिए पर वो अवेलेबल ही नहीं है. एक तो मतलब 1.5-2 साल से नहीं है. मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं यूज करने वाली हूँ अपना, जो मैं खुद का यूज करती हूँ वो है गुड वाइब्स का वाटरमेलन जेल. इट्स नॉट मॉइस्चराइजर, इट्स अ जेल काइंड ऑफ अ क्रीम. इट्स रियली गुड दो. मॉइस्चराइजेशन हो चुकी है एंड नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू लिप बाम विच इज माई मोस्ट फेवरेट. अभी मैं बता रही हूँ मोस्ट फेवरेट आउट ऑफ एवरीथिंग हियर. दिस इज द माई ग्लैम लिट पीएच लिप बाम. दिस इज समथिंग दैट यू नीड like in your real life. This is not just a lip balm, this is a tinted lip balm which is really nice. I really like it. Can you see how beautiful this color looks? And it is also actually very pretty to use. अभी मैंने लगाया तो थोड़ा सा आपको टिन दिख रहा है बट धीरे धीरे जब तक मैं वीडियो खत्म करूंगी लाइक यू कैन सी हाउ मच ऑफ टिन इट गिव्स मी एंड इट इज सच अ प्रिटी कलर. रोज ऑल डे. लाइक इट्स perfect. I don't even wear lipsticks nowadays because I wear this all the time. Dry हो जाता है तो ऐसा नहीं लगता कि your lips are dry. Okay, that's something that I have noticed about this lip balm. So I'm gonna give my referral code in the description box below. Don't forget to check it out. Because if you purchase through that link, you will be getting 150 rupees off. So yeah, I think that's a great thing to have in this app or in this brand. Now let's move on to the foundation. और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को. So this is the foundation that I purchased. This is the Treat Love Care Oil Control Foundation. इसके ऊपर जो मेरा disappointment गया है ना, it is for ₹995 और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 shades हैं. Like can you believe it? ये जो है it is said to be for light to medium skin with warm undertone. क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है. Like it feels really good and ये काफ़ी हद तक मतलब मीडियम कवरेज है. फुल कवरेज तो मैं नहीं बोलूँगी, मीडियम कवरेज है. एंड टॉकिंग अबाउट द ऑयल कंट्रोल थिंग, इट डज कंट्रोल योर ऑयल. सो आई एम गोना टेक 1 pump into the back of my hands and you're gonna see how my face looks after I use it. So what I'm gonna do is एक साइड से मैं स्पंज यूज करूँगी और एक साइड पे मैं अपना ब्रश यूज कर लूँगी. It has really refreshing kind of fragrance जो मुझे काफ़ी पसंद है. तो ये जो शेड है Renew, I don't know but if you can see my skin color has completely changed. लाइट के अंदर तो पता नहीं चल रहा I think इतना ज़्यादा but when you see it in person it looks, this is an olive. like ये olive shade है. I think this is my second time applying it. मैंने पहली बार ही अप्लाई करके छोड़ दिया था, इसको अप्लाई नहीं किया. So 995 a waste of money.
at least in my skin color. And now I'm going to use the beauty blender. Like, it looks very patchy in person if you use it with a beauty blender. Like, can you even see? I like this side more than this one. Okay, now let's move on to concealer. But मेरे पास concealer नहीं है. So what I'm gonna do is whatever is left in the back of my hand, ये foundation, I'm gonna use it with a concealer brush to make it look like concealer even if I don't have concealer. And because it has decent coverage, ये actually eyes को conceal भी अच्छा ही कर देता है. I actually wanted to buy this Total Makeover FF Cream Foundation Palette in the shade Honey, but I never got it. I have a screenshot here. So it was the order was placed on 12th May 2020, year back I think, and this retails for $14.50. So this is the thing, not even one shade is available. So the next thing is setting up your face, and for that I have the My Glam Pose HD setting powder. This is something that I really like. It retails for rupees 6.99. It is said to be actually a translucent powder, but ये white powder. So ये I love this powder. Okay, I have used it. I think you can only see I have actually hid my pen with it. तो आपको पता चल गया कि मुझे कितना पसंद है ये पाउडर. बट प्रॉब्लम ऑफ दिस इज कि ये फ्लैशबैक करता है जब आप फोटो खींचते हो. सो आई वोर इट इन माई ब्रदर्स वेडिंग, कजिन ब्रदर्स वेडिंग, और वहाँ पे एक्चुअली ईच एंड एवरी फोटो में मेरा ऐसा वाइट ऐसा आ रहा था. एंड देन अगेन आई हैड टू एडिट द फोटोज. ओके, तो ये हो चुका है सेटिंग माई फेस. सो इफ यू वांट यू कैन एक्चुअली परचेज दिस पाउडर बिकॉज दिस इज अ रियली गुड पाउडर. ओके, एक डिसअपॉइंटमेंट या एक डीमेरिट के लिए आप एक मतलब प्रोडक्ट को बुरा नहीं बोल सकते. ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है. नेक्स्ट थिंग इज अ ब्लश, एंड फॉर दैट आई हैव द माई ग्लैम के प्ले पीच ब्लश. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. बहुत पिगमेंटेड है एंड it smells really nice. So I have the same variant in the highlighter, and इसको आप highlighter कम और eyeshadow ज़्यादा बोल सकते हैं. Like, it's very pigmented to be a highlighter. So this is the K Play Melon highlighter, which I'm gonna be using the next. I'm gonna just swirl it once, and can you see the pigment? Like, it's crazy. It's crazy. So I like this highlighter very much for this glow, but it's not finely melt. As you can see, it has certain kind of chunks in it, for which I think is a little bit for a highlighter. But this highlighter really makes good eyeshadow thingy, eyeshadow base या जो भी आप बोलो. तो eyes के लिए I have the My Glam Liquid Eyeliner Plus HD Eyebrow. एक में brow और एक में eyeliner. Okay, so eyeliner is good. It's jet black, but problem है मुझे eyebrow से. Like, ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है. But if you ask me about the pigmentation, it has really good pigmentation. बट इट डजंट मीन कि मुझे अगर बुरा लगा, मुझे अगर ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा है तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा. बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल फाइंडिंग इट रियली गुड. आई डोंट लाइक माई आईब्रोज टू लुक लाइक दिस. What I did. Can you see my problem? This is my problem. My eyebrows are looking like I have pasted something on it. I don't really like it. Since I don't have a eyeshadow, I'm going to mix this kind of a two. Usually people dark जो है मतलब crease में लगाने के लिए dark eye shadows लेते हैं and shimmer shades को बीच में लगाते हैं. But I'm going to do a complete opposite thing today. Let me bring you closer ताकि आप देख सको मैं क्या कर रही हूँ अपने आप को. So this is how my eye look turned out. I don't know why I pulled this turned out today, but yeah, it is what it is. Let's move on to the eyeliner.
दिस ऑल्सो हैज वन डीमेरिट एंड दैट इज ये बहुत जल्दी सूख जाता है. इसको रेक्टिफाई या सही नहीं कर पाते हो. It doesn't give you the time. So my eyeliner is done, and now that I see, I don't look that bad. Next thing is lipstick, and I have 3 lipstick, 2 lip gloss है. These 2 are lipstick. Yes, दोनों same नहीं है. एक light color का है और एक dark color का है. One is Butterlicious Shea Butter Creamy Matte Lipstick. It's in the shade Rose. And I don't understand the concept of creamy plus matte lipstick. Yeah, I don't understand that, but it's a nice lipstick. And then I have 2 lip gloss, and this is the My Glam So Pearly lip gloss. दूसरा वाला lip gloss है My Glam Molten Matte Metallic Liquid Lipstick. Okay, so this is said to be a lipstick, but I think this is a gloss. This like I want bright lips today, so I think I'll be going with this one. Can you see the color? How cute it looks, how beautiful it looks. So this range, ये जो range है ये बहुत ज़्यादा matte है, and by matte I mean it's very drying and it does not come off very quick. But जो इनका colors है, like the variety of colors it has, it's very beautiful. Right now I'm just going to quickly show you the shades of lipsticks. This one is ये जो पहले वाला है ये है. It looks quite similar to me, but it's a little bit light is lipstick से. Then the second one is the Butterlicious lipstick in the shade Rose. Goes very well with the name. The third is the Molten Matte Liquid Lipstick. It's like a lip topper or lip gloss. The last one is the gloss, which is like a tinted lip gloss. It looks very beautiful though. And with this I almost finished products of the My Glam, but since the look is incomplete without mascara and eyelash, I'll quickly be back after putting it on. So I am back after applying the eyelash and mascara. So I'm gonna give you a quick close-up of how I look. So this is how I look like. If you see up close, then I am, मतलब मैं डूबी हुई हूँ glitter chunks में. It looks very pretty though, like the eyes and the lips doesn't match, but it looks good, I feel like. So I think I have almost used every product that I had, and right now I think I'm gonna give you a quick review of what I like and what I didn't. So the face cleanser that you saw, उसका मुझे इतना मतलब असर नहीं दिखा मेरे पे. Yeah, it did brighten up my skin to a point, but is it very necessary? Then no. उसके अलावा आप कोई भी face wash use कर सकते हो. Then comes the lip balm, which is my ultimate favorite out of everything, like everything. So if you don't want to wear a lipstick under the mask, this is the one for you. Like I have been wearing this one constantly from the last 3 to 4 months. एक दो बार में मैं बाहर गई थी, so I wore it, and ये mask में लगता नहीं. So I don't know why that happens, but this is a very good lip balm. I am going to purchase the other variants as well. I think I need to stock it up before ये unavailable हो जाए. हमने क्या लगा था? So this foundation, तो ये फाउंडेशन जो है ये अच्छा है, कवरेज वाइज ये बहुत अच्छा है, बट द ओनली थिंग दैट डिसअपॉइंटेड मी इज द शेड रेंज. लाइक इट हैज ओनली 3 शेड. लाइक कैन यू बिलीव इट, आज के दिन में 3 शेड होना. इट ऑल्सो कवर्ड माई अंडर आई एज वेल. लाइक इट वर्क एज अ कंसीलर लाइक रियली ग्रेटली. सो आई थिंक आपको पता चल गया कि इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है. द नेक्स्ट थिंग इज द पोर्स HD सेटिंग पाउडर. दिस इज अ पाउडर दैट आई लाइक. या देखने से पता चल जाता है. सो या, दिस इज अ पाउडर दैट आई लाइक. इवन दो इट फ्लैशबैक्स इफ यू वेयर इट टू मच, मतलब अगर आप ज़्यादा ब्राइटन करना चाहते हो तो आप ये नहीं कर पाओगे बिकॉज इट फ्लैशबैक्स. बट या, दिस इज अ रियली गुड सेटिंग पाउडर. जो मैंने बताया था आईज के लिए, एक हाई डेफिनेशन ब्राउ पाउडर है और एक liquid eyeliner है. So I love the eyeliner part, but I don't like the eyebrow because it gives a lot of fallout, and yeah, I just don't like it as much. और ये काफ़ी pigmented है, which I don't really use. Then comes the highlighter and the blush. So
The blush is really great. You can also use it as an eyeshadow, like you have seen, like it's quite showing off as a good eyeshadow. Then the highlighter, ये less highlighter है और ये ज़्यादा eyeshadow है, I think. Then the last thing I think are the lipsticks. This range, as I showed you, is very drying, very matte, as I said. But however, this is a creamy lipstick. I think it goes well with the name creamy matte lipstick, क्योंकि ये जब dry मतलब सूख जाता है तब ये matte हो जाता है, but it doesn't like makes you matte. It's like a creamy matte. Yeah, now I understand it. Okay, then the next one is the Molten Matte liquid lipstick. Even though it is a lip topper, it's not a lipstick. Don't do that mistake of buying it in, you know, lipstick substitute के हिसाब से मत खरीदना इसको. It's good if you need it. No, this one is something I think it's not available now. मैंने ये Valentine's Day पे लिया था. It's quite good. It's very good. अगर ये स्टॉक पे वापस आता है तो आप ये ले सकते हो. Okay, so that was it. I think I have showed you everything that I have. I gave you my honest review and honest opinion, how I feel about the products, and is it a necessary or not? Like, do you want to buy it or not? So yeah. That was it for today, and I'm gonna give my referral code by which you will get 150 off in the description box below, so make sure you check that out. अगर आप लोगों को खरीदने का मन किया तो you can you know, go and purchase through that link. Yeah, so I hope you have liked this video. अगर आपको पसंद आया हो तो like करना मत भूलिएगा, and make sure you subscribe to my channel, hit the bell notification, and I'm gonna see you on my next video. Until then, bye bye.